Hello students, hope you are doing well. Now we are going to start with the very first chapter of class 12th biology, which is reproduction in organisms. So आप सब जानते हैं कि reproduction is the fundamental feature of living organism and it is useful for the existence of species. क्योंकि reproduction process में organism अपना नंबर इंक्रीज करता है और नंबर इंक्रीज होने से उसका एग्जिस्टेंस जो है अर्थ पर वो एश्योर हो जाता है, इसलिए ये यूज़फुल है एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लाइफ स्पैन. सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ एंड लाइफ स्पैन मे बी few minutes to several thousands years. देखिए बच्चों, लाइफ स्पैन वर्ड इज वेरिएबल. इट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. वी हैव द एग्जांपल्स लाइक मे फ्लाई, इट इज़ 1 day. बटरफ्लाई, इट इज़ 1 to 2 week. wheat plant, it is 5 month. Banana tree, it is 25 year. Banyan tree, it is 200 to 300 years. Sycamore tree, it is 3000 to 4000 years. While in animals, in dog it is 25 year, cow it is 25 year, parrot it is 140 year, tortoise it is 150 years. Now, lifespan has 4 stages like juvenile stage, maturity stage, aging and senescence, and last one is death. Juvenile stage. In this stage, organism develop the capacity to reproduction. It means इस स्टेज में ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली डेवलप नहीं हुआ है. नंबर 2 इज मैच्योरिटी स्टेज. इन दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म completely matured sexually and reproduction starts in this stage. Aging and senescence, it is a reversible process of body in which metabolism become weak. Now last 4 stage is death. Senescence leads to death and all biological activities become blocked. It is called death. Now, next is there is no interlinking of lifespan and size of organisms. It means size और लाइफ स्पैन का कोई लिंक नहीं है. वी हैव वन एग्जाम्पल दैट काउ जिसका साइज पैरेट से बहुत ज़्यादा है, बट द एज ऑफ काउ इज 25 years while the age of parrot is 140 years. Now, the definition of reproduction. It is biological process in which organisms produce young one similar to themselves, and these young ones grow and mature to repeat the process of reproduction. Next one is the purpose of reproduction. We have 4 purposes of reproduction like maintains the continuity of life, maintain the population of young adult and old individual, induce the variations in the organism which are essential for adaptation and evolution, and life exists on the earth due to reproduction. Next one is the basic features of reproduction. We have 7 basic features like DNA duplication, synthesis of RNA and protein and other biochemicals, increase the cellular count due to cell division, growth of cell, formation of reproductive units, formation of new individual from reproductive units, and number 7 maintains the continuity and existence of species on earth. These are the 7 basic features of reproduction. Next is the alternation of generation. Students, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन मिलती है. गैमिट फॉर्मेशन जो होता है उनमें मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है और गैमेटिक फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और उस डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो देन प्लांट बनता है. तो उस जनरेशन में हैप्लॉइड डिप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेटिवली आती है. इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. नेक्स्ट इज द types of reproduction. So we can see that there are 4 types. Number 1 vegetative, number 2 asexual, number 3 sexual, number 4 is special methods.
And we can see the natural vegetative reproduction again is of two types, like natural and artificial. Natural reproduction is of seven types, like underground stem, creeping stem, aerial stem, by roots, by leaf, bulbil, and last one is turion. Number one, underground stem is can be divided into the five types like rhizome, bulb, comb, stem tuber, and sucker. Creeping stem is of three type like runner, stolen, offset, and rest of the type is the aerial, roots, leaf, bulbil, turion. Now, artificial vegetative reproduction is of four types like cutting. Cutting is of two type like root cutting and stem cutting. Layering is of two type like mound layering and air layering. Grafting is of six type like tongue grafting, wedge grafting, crown grafting, bud grafting, side grafting, and last one is approach grafting. And number fourth is micro propagation. Now you can see the asexual reproduction is of six type like fission, sporulation, budding, fragmentation, regeneration, and gamy. Sexual reproduction is of three type: isogamy, anisogamy, and oogamy. Spatial method is of four type like apomixis, adventive embryony, vegetative embryony, and agamospermy. ये एक बेसिक मैप है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का. हम हर एक स्टेप को फर्दर एनलार्ज करेंगे. उनके डायग्राम्स भी हैं, उनकी पिक्चर्स भी हैं. सो मूव फॉरवर्ड टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेनली सीड रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वहाँ पर एंजियोस्पर्म है. तो एंजियोस्पर्म जो है वो सीड फॉर्मिंग प्लांट है, और सीड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है. और जब सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो उससे हमें नया प्लांट मिलता है. लेकिन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है सीड के अलावा भी हो सकता है, और उसके लिए उसके उसमें क्लोन्स बनते हैं और उनका प्रोडक्शन शॉर्टर टाइम में होता है. तो आप देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिवली, उसमें प्लांट्स जो होते हैं इट प्रिजर्व द प्योरिटी, रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ रेस वैरायटी इनडेफिनेटली, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं आते हैं, क्योंकि ये सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप लाइक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये नेचर में नेचुरली होता है, यानी नेचुरली हो रहा है बिल्कुल, इसलिए हमने इसको नेचुरली बोला है. और इसमें जो प्लांट पार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल. और ये फॉलोइंग टाइप का होता है. आप देख सकते हैं नंबर वन अंडरग्राउंड स्टेम, उसको उसमें नंबर वन है राइजोम. तो राइजोम इट स्टोर्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, एंड बर्ड्स आर डेवलप्ड इन द एक्साइल ऑफ स्केल लीफ. इन पे जो कवरिंग होता है वो स्केल लीफ का होता है. एंड दीज बर्ड्स आर न्यू एरियल शूट्स इन फेवरेबल कंडीशन. ये दीज बर्ड्स कैन फॉर्म द न्यू एरियल शूट्स. एग्जाम्पल लाइक जिंजर, टर्मरिक, बनाना एंड एस्पीडियम. You can see the diagram of this ginger. अदरक का डायग्राम है ये. नेक्स्ट वन इज द bulb. Food material store the scales of bulb. Bulbs are the underground condensed shoot. Bulbs are apical bud on the stem and axillary bud in the axil of scale. So these buds form new plants during favorable conditions, and stem is reduced disc shape. Example like onion in Allium shipa, garlic Allium sativum. Next is the, you can see the diagram of the onion. Next one is the comb. Comb is the modification of underground stem which grows vertically in the soil. This is the important term, that it grows vertically. They have unbranched swollen underground stem with circular nodes. They have buds for growth of daughter plants. Example Jamikand, Colocasia means Arbi, Freshia, Crocus venda. This is the diagram of Colocasia you can see on your screen. Next is the stem tuber. These are almost rounded and fleshy due to storage of food material like potato. These have buds on eyes on their surface.
These birds grow into new plantlets when these tubers are their parts. Having eyes are placed on soil. Example potato, artichoke. Next one is the sucker. These are slender, undergrounded branches, and these branches grow obliquely and come out of the soil. After a few days, these branches separate from the parent plant, give rise to new and independent plant. Example mint and chrysanthemum. Next is the creeping or subaerial stem. Number one is the runner. Runner, they are narrow, green horizontal branches. These branches develop at the base of crown and roots at interval. At their nodes, axillary buds and adventitious roots are developed. The buds grow into aerial shoots. So these are the runner. And the example like lawn grass, like cynodon, Dub grass, centella, oxalis and hydrocotyle. You can see the diagram of runner grass जो नॉर्मली हमारे घर के आसपास लगी होती है, वो रनर ग्रास इसका एग्जांपल है बेसिकली. नेक्स्ट द स्टोलन. These are the arched horizontal branches that develop at the base of crown and help in vegetative propagation like runner. Example strawberry, Vallisneria. तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इसका डायग्राम. ये स्ट्रॉबेरी का स्टोलन है. ये पोर्शन जो है फर्दर ग्रो करता हुआ और आगे नए प्लांट को बर्थ देता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द offsets. These are the one internode long runner that found in aquatic plants. Breaking of offsets produce new plants. Example Iconia crassipis या water hyacinth, pistia यानी water lettuce. तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑफसेट है और ये ऑफसेट जो होता है ये आगे ग्रो होके आगे ही नए प्लांट को बर्थ देता है और ये एक्वेटिक होता है. नेक्स्ट पॉइंट एरियल स्टेम. These are the fleshy phylloclad found in Opuntia. Opuntia means नागफनी जो हमारा डेजर्ट प्लांट है बेसिकली. And each segment of such stem can form a new plant. Like sugar cane is propagated by planting segment of stem having at least one node. ये एग्जाम्पल है इसका, आप डायग्राम देख सकते हैं. शुगर कैन जो होता है इसके अंदर ये नोड्स हैं, ये बेसिकली ये इंटरनोड है, ये बर्ड्स होती हैं इनमें शुगर कैन में. Next is the by roots. So both tap roots and adventitious roots take part in vegetative propagation. These roots have buds which under favorable condition proliferate to give birth to the new plants. Example like Dalbergia, guava, poplar, albigia, muraya. In sweet potato, dahlia, asparagus, tapioca, fleshy roots have adventitious buds which take part in vegetative propagation. Next is the by leaf. The leaves of some plants store food material get fleshy. यानी उनमें जब फूड आता है तो वे थिक हो जाती है, फ्लैसी हो जाती है. During favorable conditions, special type of birds develop on them which are called adventitious birds. When these leaves get detached from the plant and fall down on the ground. जब ये प्लांट से अलग हो जाती है, नीचे गिर जाती है, उनमें बड लगा हुआ है और वो बड जो होता है वो एडवेंटिटियस रूट और सूट का फॉर्मेशन करता है. इन डिफरेंट प्लांट्स द एडवेंटिटियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. लाइक इन ब्रायोफिलम बर्ड्स डेवलप ऑन द लीफ मार्जिन. ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. In Kalankova, bud develops at the side near the apex. Next, in Begonia, bud develop on the surface of the leaf and petiole. In Adiantum caudatum is also known as walking fern. इसको walking fern कहते हैं because it leaf tip form new plants when they come in contact with soil. Next is the diagram of bryophyllum. तो आप देख सकते हैं कि देखो हमने यहाँ आपको डिस्कस किया था कि ब्रायोफिलम में जो है लीफ मार्जिन से नए सूट वगैरह जो है एराइज होते हैं. तो आप देखिए ये ब्रायोफिलम का डायग्राम है और इसमें लीफ मार्जिन से ही देखिए आप यहाँ से नया जो है प्लांट नए रूट और सूट का फॉर्मेशन हो रहा है. और
बेसिकली ये जो डायग्राम है बिगोनिया लीफ का है। तो आप देखिए बिगोनिया लीफ के अंदर हमने बताया आपको कि बिगोनिया लीफ के अंदर जो लीफ सरफेस है वहाँ से नया जो है शूट और रूट डेवलप होता है। तो आप देखिए ये लीफ सरफेस से नया जो है रूट और शूट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट बाय बुलबिल बर्ड्स विच स्टोर फूड कॉल्ड बुलबिल, they got detached from the mother plant and fall down on the earth. In favorable conditions, it grows into new plants. Example oxalis, agave, pineapple, diascorea, lily. ये बेसिकली डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। नोट इन agave bulbil आर मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स। फूल जो होते हैं फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं वो ही बुलबिल के फॉर्म में वर्क करते हैं। लाइक इन ऑक्जेलिस द एपेक्स ऑफ फ्लैसी ट्यूबरस रूट मॉडिफाइज इनटू बुलबिल। इन डायोस्कोरिया लीलियम ऑनियन गार्लिक ग्लोबा बल्बिफेरा द बर्ड्स लोकेटेड बिलो द इन्फ्लोरेसेंस आर मॉडिफाइड इनटू बुलबिल। तो ये आपको एग्जांपल्स बेसिकली आपको याद करना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बाइटूरियन, it is a swollen bird which contains much stored food. It is detached from the parent plants and remains active through winter and give rise to a new plant in following spring. Like they are found in aquatic plants. Example Potamogeton utricularia. Now you can see the picture of a turion which is helpful in the vegetative propagation. So okay, goodbye, and we'll discuss the later on next topic. Thank you.